गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमने प्लान बनाया है, हम स्काई रेल लेते हैं जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे। क्वींसलैंड एक ट्रॉपिकल स्टेट है, ट्रॉपिकल वेटलैंड्स एक्सप्लोर नहीं किया तो क्या किया। वी थॉट विल टेक अ स्काई रेल टुडे, जो कि स्टार्ट होती है यहाँ एक टाउन है, प्लेस है केन्स में, स्मिथफील्ड, वहाँ से शुरू होगी एंड इट टेक्स 1.5 आवर वहाँ जाने के लिए एंड ऑन द वे बैक इट्स 2.5 आवर्स। ओल्डेस्ट रेन फॉरेस्ट, even older than Amazon rainforest. Also ये longest gondola है. It was the longest one in the world before 1985 if I remember. उससे पहले का longest gondola है जो sky rail. It goes from Smithfield on to the Byron Falls. बहुत ही सुंदर है और आपके साथ हम एक्सप्लोर करेंगे. Okay, well, we're gonna take off now. Might just put my bag down. First things first. And there we go. I hope everything is locked. Is it? I'm not gonna say anything because I'm scared. Look at the cable, how high it is. You can just see from this way how high it's going to go. Have a look.
सायरन फॉल्स जिसको कहते हैं. The main अभी थोड़ा बारिशें नहीं हुई. I don't think we had rains from last couple of days since we have been here. December being the wet month. फिर भी इतनी बारिशें नहीं हुई है, so we can't see much of a waterfall there. But it's really heavy and a really fast waterfall, जो कि and it goes for till December to April. And the best thing यहाँ पे मैंने देखा है कि every single stop पे इतनी अच्छी walkways बनी हुई है ना. ये है कोरंडा होटल. कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में इसको आर्मी ने अपना मेडिकल सेंटर बना रखा था. It was turned into a medical center to cure, look after the injured army people. So अभी बंद लग रहा है मुझे. Due to COVID, there's not many people coming here, so it's not operating. But yeah, it's fascinating, those facts which you can see, along the way when you explore all these things. अच्छी कॉफ़ी थी. थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो गया. 10-15 मिनट. तो कैफ़े इस एरिया में अननोन जगह, यू फील लाइक इट्स मिडल ऑफ नोवेयर, पर यहाँ इतने अच्छे सिटिंग अरेंजमेंट्स है. यू कैन हैव अ रिलैक्स कॉफ़ी. फ़ैन चल रहा है, हवा अच्छी आ रही है. बाहर से हवा बिल्कुल नहीं है, बट अंदर बैठे मज़ा आ रहा है. सो ब्रेकफास्ट हो गया. अभी चलते हैं वापस. आई थिंक वी शुड वॉक प्रोबली अनदर 10 मिनट्स स्काई वे तक. तो वहाँ से लेते हैं फिर और आपसे मिल. अभी हम वापस जा रहे हैं. वी टुक अ स्काई रेल बैक, जहाँ पे हमने पार्किंग करी थी. सो वहाँ से हम पाम को जाएंगे. स्काई रेल जर्नी इट्स ऑलमोस्ट 1.5 hours. आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड you could see one of the tallest trees in the world in this rainforest, and waterfall भी देखा, and it's very very good. Everybody should visit here and enjoy this flora and fauna.
पूरे टायरिंग डे के बाद जो हम वहाँ गए थे केबल वे में स्काई रेल पे, उसके बाद बैठ के आराम से पाम कोज में लंच किया। ये एक छोटा सा मिनी रिजॉर्ट सा है, सब कुछ है यहाँ पे, और बीच है, सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स है, एनी एक्जॉटिक फास्ट फूड और रियली स्टाइलिश गुड डिशेस भी है। और बैकड्रॉप पे पूरे रेस्टोरेंट्स है और अपार्टमेंट्स है, सो सामने अपना बीच है, ओशन है। इट्स सच अ गुड एनवायरनमेंट। आई थिंक नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे यहाँ पे विल बी मोर स्टेइंग हियर, एंड यू हैव गॉट एवरीथिंग एनक्लोज्ड हियर। पूरा दिन तो इतने पसीने। One thing definitely is a benefit there coming in summer is you sweat a lot and you lose a little bit calories without doing anything because you're walking all the time, और तुम्हारी calories naturally lose हो रही है. And also skin starts glowing a little bit. So not all that bad.